أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, हम पहले अल्लाह पाक के नाम पढ़ेंगे, फिर अस्माए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान की बहसत का मकसद क्या है और अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, इनको क्यों भेजा और हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आइए अभी हम अस्माए हुस्ना पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल क़ुद्दूसुस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विर الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المضر السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين الولي الحميد المؤسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو شيء السميع